your job, काफी कुछ अच्छा भी करा है आपने, you've done a lot of, like I said in the beginning, whether it's, and we'll come to Vivek Agnihotri and the other people there, but let's talk about even Z and Alt Balaji, like why this shift, and what exactly interests you in their particular company, किस type का काम करते हो आप, so that ओके, people who watch, yeah, they can तो understand. मीडिया लॉयर का बेसिकली काम होता है अगर कुछ चीज प्रोडक्शन के लिए जानी होती है। सो अगर Right. फिल्म प्रोडक्शन होता है तो आपके पास राइटर सर्विसेज होती है, आर्टिस्ट सर्विसेज होती है, प्रोडक्शन अग्रीमेंट होता है, को प्रोडक्शन होता है बिटवीन टू प्रोड्यूसर्स। एक पैसा लगा रहा है या दोनों पैसे लगा रहे हैं, एक प्रोडक्शन एक्टिविटीज मैनेज कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। सो Right. दोस काइंड्स ऑफ अग्रीमेंट्स, यू विल बी सरप्राइज टू नो, जो स्पॉट दादाज होते हैं ना, वेयर हाँ. यू हियर कि अरे हमारी टीम है, उनके भी अग्रीमेंट होते हैं। द मेकअप Okay. आर्टिस्ट देयर, एनी एंड एवरी पर्सन हु Is नोज involved. की शूटिंग हो रही है, वहां पे है, उससे अग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, सो दैट द प्रोड्यूसर कैन एंश्योर कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास है, हम ये जो भी क्रिएट कर रहे हैं तुम जाके किसी और को नहीं दिखा सकते, Right. बता सकते, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करो, Right. आईपी हम रिटेन करते हैं ना, हम इसका डेरिवेटिव वर्क बना सकते हैं। डेरिवेटिव Right. वर्क का मतलब होता है आई कैन कन्वर्ट दिस फिल्म इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मीडिया, लाइक अ Right. गेम Yeah. और ऑडियो बुक एक्सेट्रा। हाँ. 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 तो ये सब काम होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर स्क्रिप्ट रिव्यूइंग। सो जो भी आप मूवीज देखते हो वो स्क्रिप्ट रिव्यू करने के लिए आती है लॉयर्स के पास। वी रीड एंटायर स्क्रिप्ट, वी Right. टेल द प्रोड्यूसर देखो ये तुमने यहाँ पे एचडीएफसी का नाम ले लिया है विदाउट देयर परमिशन, सो नाउ Right. either you get their permission, and if you're not getting their permission, change it. You Right. cannot use any brand's name without permission. For that Right. matter, you cannot use any music, any clippings, anything without अच्छा. permission. Yeah, you can't Okay. use So anything. it's that restricted. Okay, Very Avadhi, so a lot restricted. of good work for you. अच्छा, okay, no, so just as a curious person in general, okay, so let's say अगर मैं किसी की बड़ाई भी कर रहा हूँ, कोई भी Hmm. ब्रांड है, और मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये देखो कितनी अच्छी ब्रांड है और ये वो, उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा? If you're commercializing on it, yes. तो अगर आप Okay. किसी की ब्रांडिंग के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हो और फिर वो यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन प्रेस कर दिया है और ब्रांड के नाम पे पैसे कमा रहे हो, ब्रांड आएगा, सू करेगा, बोलेगा पैसे दे दो। Okay. 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 तो Okay. अगर नाम लिया जा रहा है इन गुड फेथ एंड टेलिंग गुड थिंग्स अबाउट इट without monetizing it or commercializing or banking on the brand, then definitely they will appreciate कि अरे बहुत अच्छे लोग हैं, रिव्यू में डाल दो। राइट, राइट, नहीं, बट जैसे कि चलो एक फिल्म में चल रहा है, फिल्म तो कमर्शियल एस्पेक्ट से ही बनी है, और राइट, फिल्म में मैंने XYZ का नाम ले लिया, परमिशन लगती है। परमिशन लगती है, तो फिर आप सारे चीज के परमिशन, अच्छा आप, और ये अलाउड होते हैं, जैसे कि ये डिस्क्लोजर अग्रीमेंट आप साइन करते हो, नॉन डिस्क्लोजर, कि आप फिल्म्स के नाम नहीं बोल सकते, या फिर यू कैन टेल इन द पब्लिक नहीं, या तो दीज आर द फिल्म्स आई डिड? एनओसी लिया जाता है इन ब्रांड से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसमें लिखा जाता है इधर इन फिल्म, वो मैं बाद में समझाती हूँ। एनओसी लिया जाता है, सो इट इज कॉल्ड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये होता है कि मैं आपकी ब्रांड का नाम अपने मूवी में लिया है, इतने सेकंड से इतने सेकंड में लिया है, आर यू ओके विद इट, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। राइट, अभी राइट, अगर उनको ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो साइन करके भेज देंगे, बट अगर राइट, उनको ऑब्जेक्शन है तो वो बोलेंगे ये रही हमारी फीस, हमारा नाम तुमने यूज किया है, हम इतने पैसे भेज दो, एंड दैट बिकम्स एन इन फिल्म ब्रांडिंग। राइट, ओके, ओके, देन यू हैव टू शो वॉट एवर यू आर टेलिंग अबाउट द ब्रांड टू देम। हमें वो स्क्रिप्ट राइट, भेजनी रहती है कि इतने सेकंड से इतने सेकंड्स आपके बारे राइट, में राइट, हमने बोला है। वो तो चलो उसके बारे में हो हाँ, गया, मैं आपके करेक्ट, बारे में बात कर रहा हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी फिल्म के लिए ये सब कर रहे हो, यू आर वर्किंग राइट। विद इट, क्या यू साइन इट विद द फिल्म, की जब तक फिल्म प्रोड्यूस नहीं हो जाएगी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती कि मैं इसके लिए काम कर रही हूँ, या यू कैन कम आउट वो इन द ओपन एंड साइन, से दैट आई एम नो वर्किंग नो, विद द तो फिल्म? वो साइन करने का जरूरत नहीं होता है। एज अ लॉयर वी हैव अ कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज राइट, इनबाउंड, राइट, राइट, तो मैं वैसे भी शेयर नहीं कर सकती अनटिल ओके, अनलेस दैट इज आउट। तो ओके, ना मैं बता सकती हूँ किसी को कि हाउ मच मनी समवन इज गेटिंग, ना ओके, मैं बता सकती हूँ व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर अग्रीमेंट, दैट्स क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, तो एक दो क्वेश्चन चले गए। No, no, तो I was just कुछ kidding करना नहीं around, but पड़ता yeah, है। yeah, but okay, तो आप फिल्म के नाम्स नहीं ले सकते, मतलब जैसे कि मैं अगर आपको पूछूं इस फिल्म में काम करा, ओके, एंड बट what about your work with this? I watched this super teens वाला thing. या, This is something that you openly and obviously आपको credits भी दिए हुए थे. There is यस, something which is pretty interesting, काफी different एक कुछ काम था. What यस। made you think कि यार मैं इसमें इन्वॉल्व होती हूँ और मतलब ये काम करती हूँ?
So the producer Ashay is a really good friend of mine, Right. and he reached out to me with this concept. It's a documentary Yeah. जहाँ बच्चों ने बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ इनोवेट किया है, बनाया है, बात की है, राइट? सो इन पर्सन ऑल्सो डॉक्यूमेंट्रीज आर वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी. एक तो अच्छा, वो ओके। ट्रूथ है, यू नो, इट्स ओरिजिनल एंड इट helps you connect to the grounds. He, Right. oh my god, this is happening. Yeah. So when he reached out to me, he told me all this is happening. Would you be willing to be a part, my legal person in this? And I was more than happy. And I was like, okay, Asha, let's do this. Yeah. I will take you from start to the end. And then I remember talking to the bachas and the parents there, because Yeah. सब under 18 थे, तो guardians लगते Yeah. हैं. For that matter, आप बच्चों के साथ agreement sign नहीं कर सकते. Right, आपको, right. Minor. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. so the guardians are always responsible for it. Right. And yeah, it was very interesting, the way it was taking turn, the way the entire production house was so enthused about it कि Right. तूने ये करा वो करा. There was so much research goes on, you know, आप कुछ भी नहीं दिखा सकते ना documentary. So yeah, that's my specialty also. I'm working on 15 to 16 documentaries, Okay. and I love the concept. If I love the concept, I am up there working with them. कि Okay. okay, I will तो get this in तो place. आपकी एसोसिएट कर सी आई बीन सीइंग दिस वेरी काफी ना पॉजिटिव वाइब है एक मतलब कि आप जो कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हो उसमें एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग ओके बट ये इन चीजों में भी आई थिंक तन्मय भट्ट इज द वन हु पोस्टेड इट ऑन Yes, हिज yes, यूट्यूब थिंग आल्सो इफ पीपल वांट टू वॉच इट आउट आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन चेक इट आउट एंड yes Avadhi is written as the person who's handling the legal stuff around it right Avadhi and yes. yeah so that is also amazing but Avdi, I see you using LinkedIn in a very different way. It's a Right. reality that LinkedIn या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जैसे कि मैं Hmm. आई डोंट यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेरे व्हाट्सएप पे आई थिंक एक बिजनेस अकाउंट है और एक शायद मेरा पर्सनल नंबर होगा एंड देन आर सर्टेन थिंग्स जो मैं अपने जो लोग हैं कुछ उनके साथ बांटना चाहता हूँ तो आई शेयर दैट बट वेरी प्राइवेट आई हैव अ वेरी प्राइवेट लाइफ एंड Okay. लास्ट एपिसोड दैट वी वर शूटिंग बिफोर दिस we had the assistant director of CCIT and they were also talking about how they believe in this they don't have any social media and then I see you making Out a there. very different, use of it, having a very different outlook to the way you've been using LinkedIn. And most of the posts that you've shared also, I was going through that. Instagram to chalo logged hi hai. But I see there are 195 posts around that as well. And so you are a social media person. Is this Total. is true? Definitely. ओके बट डोंट यू थिंक दैट अच्छा पहले तो आप बताओ आपका पर्सपेक्टिव क्या है आप वैसे आपकी क्या क्या है हैंडल्स ये भी बताओ जिससे कि लोग अगर फॉलो करना चाहें तो Uh-huh. जाकर लिंक्डइन या So कहीं पर public फॉलो कर profile, सकते when you talk हैं about public profile, it's only LinkedIn. ओके Rest ओके everything is locked, so you won't be ओके able to follow. ओके Because LinkedIn, I choose. So देखो दो तरीके से यूज होता है. एक to fetch a lot of work from there, राइट and दूसरी तरीके से to educate people. राइट I'm not going to the service part because I'm a partner, so I'm not looking out. Yeah. So I'm just I like how you थोड़ा थोड़ा बीच में you put a little flex मैंने 15-16 documentaries करी I am a partner so I'm not looking at and it's really amazing because I've been noting it and it just comes as a surprise I'm like oh okay yeah but please go on yeah. So दूसरा part होता है to educate people. So right while I was working with law firms, companies, clients, a lot of people, मुझे ये समझ में आ गया कि there are a lot of things which people they don't know right and they should be aware about. ना मीडिया लॉ का भी नॉलेज कम है एंड पर्सनली कैसे आपको लोगों को जज करना चाहिए, क्या आपको देखना चाहिए, क्या आपको पढ़ाई करनी चाहिए फॉर दिस. आई थॉट लिंक्डइन कैन बी यूज्ड वेरी नाइसली विद इट. आई right वांटेड टू एजुकेट किड्स, टू बी right वेरी ऑनेस्ट. आई एम वेरी ओपन टू गोइंग टू कॉलेजेस एंड टीचिंग देम right about things, about media. You know, it's kind of a media and entertainment awareness campaign that I do on LinkedIn. okay That's okay my yeah aim. yeah yeah That yeah one absolutely should why know not what we are doing. You know, it's very fascinating. इतना कुछ सीखने को है. And we are not restricted to only IPR laws. right हमें contracts भी पढ़ना है, हमें civil भी पढ़ना है, criminal भी पढ़ना है. There are
bunch of laws which will open and then हम सब में पढ़ते रहते हैं कि अच्छा ये भी है ये भी है. बट बच्चों को नहीं पता है कि हम पढ़े क्या, बिकॉज देयर आर नो सच बुक्स. एक Right. है, मधु गरुड़िया मैम ने Okay. लिखी है, Okay. पीपल कैन रेफर. Okay. अनुश्री मैम ने भी लिखी है. आई कैन गिव Okay. यू द लिंक्स, यू कैन Yeah, you पुट can. इट I can put डाउन. it in the या description. Sure. सो Yeah. दोस टू बुक्स गिव यू एन आइडिया कि हाउ इट वर्क्स. बट Your video sort of paused for us. Yeah. Yeah, we're back. It's just a video pause for people who are watching. But yeah, please yeah. go. So what I am doing over LinkedIn is I'm just trying to make people aware. That's the key. That you Right. should know what is media entertainment law. If you are interested, there are various scope. ऐसा नहीं है कि सिर्फ contract lawyer ही बनोगे. You can Right. be an SNP practitioner. SNP practitioner are people who are watching films, taking notes, and changing the laws. Like ये Right. हटाओ, Right. Right. ये Right. law Right. के against है, वो हटाओ, and a lot more. You can do a lot when it comes to Absolutely. media. For that, you can read my posts. Right. I like how Avdi has been marketing her throughout this podcast, but no, but genuinely also it's great if you want to reach out. I'll also put her LinkedIn in bio if she's saying that's her only public profile. Let's try and whoever who is interested can reach out to her. And I'm That sure जितना भी हो पाएगा देख लेंगे वैसे I will help. पार्टनर Yeah. वार्टनर है तो बिजी रहते हैं but still. But okay, Avadhi, just take us a little bit back. You are 5 and 7 years down the line into this business as Right. or this domain of law as far as I understand, right? But what was going inside the mind of Avadhi, which was a college girl, Hmm. and she was about to make in her way into graduation or was trying to figure out कि मुझे ये करना है वो करना है what exactly if पहले बात तो ये भी बताइए कि इसके अलावा भी आपके कोई इंटरेस्ट एरियाज थे या you were determined कि यही करना है and if not then how did you land up कैसे मिलन हुआ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लॉ That's से a आपका very interesting story. So I'm from Indian Law Society, Pune. okay ILS Okay. Yeah. And I was ओके अगेन वी आर बैक तो ये भी होती रहती है ये भी लाइफ है दिस इज द पार्ट ऑफ यू शूटिंग वी शूटिंग दिस वर्चुअली दैट इंटरनेट पॉज video. ब्लैक बैक तो होगा ही थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो यार बट या आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन व्हाट यू वर सेइंग राइट नाउ तो आप बता रहे थे बहुत Yeah. इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड वी आर हियर राइट Yeah. नाउ So पुणे जाना जरूर था, बट लॉ के लिए नहीं. आई वॉज गोइंग फॉर एन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स. या. ओके एंड वाइल मी एंड माई फादर वॉज कमिंग टू पुणे, अप्लाई किया था. सो माई फादर इज अ क्रिमिनल लॉयर, माई ओके सिस्टर इज ऑल्सो लॉयर. सो ओके कम्स फ्रॉम दैट कि अप्लाई तो कर दे, IELTS एग्जाम तो दे दो, हो जाएगा तो देखेंगे. एंड आई टॉप द लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट ओके में हो गया. सो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को सोचा कि जाने दो, राइट IELTS चलते, बिकॉज IELTS इज द टॉप 10, वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेजेस या ऑफ इंडिया, राइट? या So that's how my journey started, and I was so clueless that I don't know what I'm going to do. I don't want to do criminal because I have been seeing how criminal practice is so exhausting since my या childhood. या Sister is a corporate lawyer, so definitely join, but I was clueless कि करना क्या है, क्या फील्ड चूज करेंगे, because corporate lawyer बनना नहीं था, criminal law में interest नहीं था. So I tried arbitration, I tried family matters, सब जगह internship किया, but I was still clueless. Then Nayak and Nayak, it's a media and entertainment firm. They came to ILS for I think 3-day workshop on media entertainment laws. ओके And they were asking questions, and I was like, oh, I have an interest in it because मुझे सारे answers पता है. You ask me, I'll give you the answer. ओके And yeah, that's how I was introduced to media and entertainment law. And by the way, that was the first time I met Anushri ma'am. ओके ओके Yeah, so she was in Nayak and Nayak that time, and राइट वो यहाँ पे बता रहे थे. In fact, when I joined A&M Global, that was my first line to her, that because of you, I'm a media lawyer today. So thank you so राइट much. So yeah, राइट she राइट was an inspiration that time. And yeah, media happened, and then I started searching for internships. So I remember I did an internship in Nayak and Nayak, and followed by a couple of more. राइट The most interesting one was in Times Music.
Okay, okay, So my seniors there were very nice to me, very helpful. So I kind of figured out कि बस यही करना है, इंटरेस्ट भी है, इट्स सो इंटरेस्टिंग म्यूजिक के बारे में जानने को मिलता है. So I'm also myself a very creative person, a person who has an interest in writing books, who right, has an interest in reading them, who has an interest in dancing, music, everything. So when somebody comes to me, I can take care of them with utmost, right, creativity from my inside. right, Ki, oh, I have also done modeling. So come, let me help you out with this. I know where you're getting wrong. right. Oh, I also understand music. So let me help you out with that. And I can't let producers take away this right of yours, that right of yours. So वो इनबिल्ट है मेरे अंदर कि मैं एक बहुत क्रिएटिव पर्सन हूँ, इसलिए मैं इसे It's breaking again. I think it's Yeah, paused again. it's okay. Go on, go on, go on. It's fine, it's fine. The Yeah. audience understands इतना यार, इतना तो बनाया ही है, लोग देखेंगे क्यों? वरना कोई नहीं यार, नहीं, सब समझते तो हैं. हाँ. अगर इंटरेस्ट है क्रिएटिव फील्ड में तो आई थिंक, और आप लॉयर हो तो मीडिया से बेटर कोई फील्ड नहीं है टू एक्सप्लोर, बिकॉज यू मस्ट हैव हर्ड, जिस चीज़ से प्यार करते हो वो करने का मन करता है. Right. So if you are so much interested in this, please go become a media lawyer because you will be best at what you do. Okay. Okay, Avadhi. You by the way, I also got to know, I didn't know this, that you were also into singing and dancing and then writing books and then modeling. Do you plan to leave any like careers for other people, or are you planning to do everything in Uh, this one lifetime only? No, no, but it's just that's sort of not my question. Okay, but how do the interpersonal dynamics play out? Because it's an interesting thing, this is something I didn't know, that your sister and your father are also in this field, and then that's you're saying correct. that you don't want to do corporate law, but then Right. is this, you are a second gen lawyer and then probably the third lawyer in your family, or is Second, it been second gen. second gen, right? So it obviously plays out into some form, right, in the sense that contacts wise, internships wise, No. okay, okay, that's good, that's good, you answered it before even. So yeah, I but know no, where you were getting it. So, no. right. Okay, so that's good, because that is what I was going to ask. But how does it play out along the lines of interpersonal dynamics? So I understand that, someone who's a first gen lawyer, who's not coming from a background, who does not have an understanding, and then you starting from scratch in media and entertainment. So usme, I don't think your father or your sister is as much involved, because they're dealing with completely different fields, right? And it's Right. not that they cannot have contacts or aisa kuch. That is something that you will tell us. And I'm glad that you've already said no. But how does it play in the interpersonal dynamics? एक दिमाग में क्या चलता रहता है कि यार मेरी बहन भी लॉयर है, मेरे पिताजी भी लॉयर हैं, मैंने मुझे भी कुछ करना है, या that thing is Yeah, also yeah, yeah. there, because it's an added thing when two people, three people of your particular house only are in the same profession. That added burden is also there. Do you feel that? For that matter, my husband is also a lawyer. Okay, okay. Yeah. Yeah. So So yeah, see, like too many people in the same too field, many but people. yeah, Yes. But I think my father, is a very cool man. And right. from very start, he said, "You do you. Do Yeah. not involve in my practice. I will not be involved in your practice. That's Yeah. why we can maintain a sanity." Because my opinion will be very different from what you think. Your opinion will be very different from what I think. So let's just keep it that way. Similarly with my sister. तो हम तीनों को ये भी नहीं पता है कि हमारे क्लाइंट्स कौन है. Acha. It's that transparent. We Okay. three never talk about clients. We just Right. talk. We don't talk business at all. Right. Right. Yeah. तो अगर कोई क्रिमिनल केस का रेफरेंस चाहिए तो डेफिनेटली मैं मेरे पापा के पास भेज देती हूँ, बट दैट्स द एंड. आई विल नॉट टेक अ फॉलो फ्रॉम माय फादर कि क्या हुआ, क्या मैटर है, फैक्ट्स बताओ इसके. नो, Right. नेवर. एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड, राइट? So he knows कि I'm doing something on my own. My sister also is doing something great for herself. My husband works in Sun Pharma. He's a medical device head. Right. So even we both don't discuss our Right. clients, not at Right. all. Right. Right. So वो एक transparency और एक distance maintain करना, it's very necessary for your sanity also. And
because it's completely different fields. Right. एंड मुझे अगर कोई बर्डन है बहुत सारा, आई डोंट वांट टू पुट ऑन देम. Absolutely, a difference that you're talking about in the professional personal space is very important. And राइट. ऐसे like my Dadaji probably used to say that काम को घर के बाहर छोड़ के आया करो. बाहर When you छोड़ के get आओ. inside the house, you are a person, a member of the family. It does not matter even if you're the prime minister of the country. So that's good. I see the separation. But Avdi, how does it play in your mind? I understand that you have had this separation. ऐसा कुछ था कि मैं अपने डैड को अप्रोच तो कर ही सकती हूँ एज ए समवन हु इज अ सेकंड जेन लॉयर. यू डू थिंक एक बार तो मन में आता ही होगा कि डैड भी इसी फील्ड में है, शुड आई अप्रोच हिम टू डू गेट एन इंटर्नशिप या जो भी, या फिर यू वर लाइक नहीं नहीं मेरे को खुद से ही करना है जो करना खुद है. से ही करना है. दैट वाज फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बिकॉज वन आल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन. मैं या उज्जैन से हूँ, सो ओके. महाकालेश्वर से हूँ. ओके. एंड आई माय एंटायर प्रैक्टिस इज इन मुंबई. राइट. राइट. My father represent High Court of Indore, राइट. and though he has great connection, he can connect me with somebody, but somewhere फिर in heart ऐसा लगता है ना कि मैंने खुद से नहीं किया, ये मेरे फादर ने मुझे प्लेट में रख के दिया है. So I don't know, सब कुछ लोगों के लिए इट्स करेक्ट, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा शायद, कि अरे शी सो स्टूपिड, पापा बता रहे थे तो ले लेती ना. So no, I'm not that kind of person. I'm a I I'm a Yeah, little taken aback also because I have seen people, and ठीक है, rightly so, exploit their connections like anything. uh, And then here I have a person with me who's saying कि मुझे खुद से सब कुछ build करना है. And to be very honest, people who do not understand, so even let's say you're practicing dispute resolution is in arbitration litigation, that is a different field when you compare it to criminal law. yeah, And then when you agree. compare it to something like insolvency and bankruptcy, क्योंकि लॉ में बहुत सारे अपने अपने कोड्स होते हैं. पहले तो जैसे आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है 1996 फॉर दैट, बट देन फॉर अ आईबीसी इट इज एन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी. आई एम श्योर कहीं पर कॉर्पोरेट्स में इंटरसेक्शन जरूर आती हैं एंड दैट डज वर्क. आई मीन देयर आर टीम्स दैट आर एलोकेटेड एंड समटाइम्स द टीम mingle out, but that does not mean, and specifically आपका sector, it is very It's specialized. very niche. You, Yeah, 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 it's very specialized, it's very niche like you say it. So that's really good, Avdi. It feels also really good, and I'm glad you have a husband also who's doing law. And also okay, let's then probably talk more about this. This is something I also wanted to know. How does it play out in terms of your fact कि whether जो भी relationships होते हैं, प्रोफेशंस हमारी कई बार रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट करते हैं, correct. क्योंकि वो हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हम जिस तरीके से सोचते हैं उसको भी चेंज करते हैं. तो Correct. डू यू थिंक दैट दिट वाज समथिंग दैट यू वर लुकिंग फॉर बिफोर इवन गेटिंग मैरिड, दैट यू वांटेड समवन हु इज डूइंग लॉ, या ऐसा कोई माइंडसेट था व्हेन यू वर Oh, अप्रोचिंग योर रिलेशनशिप, या यू वर लाइक नो इट no. डजंट मैटर. No, so for that matter, my husband was into business of pharma, and he left everything for me and became a lawyer. So Okay. he shifted his entire thing for me, and I think that's love. Yeah, matlab, Yeah. it doesn't come with anything that I was looking for. But he Right. did everything for me, so I'm glad. He's, my inspiration also. He has such vast knowledge about everything. Right, right. Yeah. Avdi, your podcast, this one is turning out to be a blockbuster story. I don't. I'll I just. have many stories. Can't disclose all. Okay, okay. No, it's okay. We'll just talk about the ones you can disclose. But अभी 12वीं फेल आई है, एक फिल्म काफी अच्छी चल रही है. Yes, एंड इट्स अ रियली amazing. इंस्पिरेशनल फिल्म. किसी ने देखी नहीं है भाई, मैंने तो नाम ले लिया, पता नहीं अग्रीमेंट करना था या मैंने जो भी देखी करना है. था. Kudos to Vikrant Messi. Yeah. Love him for what Yeah, he yeah, did. yeah. But Crazy. absolutely, So, it's an amazing film. But अच्छा है यार, मतलब your journey is pretty interesting. I love it. I like how you said that your husband shifted professions. It's a very big thing. It's very big not thing. easy in today's world to find people like this. Avdi, stay blessed in those Thank you so regards. much. All the best for all of this. But okay, Avdi, on a more serious note, you said that and it's out there also, that you've worked with Vivek Agnihotri and you've worked with these people, and I said in the beginning that we'll talk about it. uh, how is it different when and firstly, what capacity is, like, is it the same as the legal counsel of a film, or is Yes. it So, how is it different than working with a corporation? आप corporation के साथ काम करते हो, उसके right. साथ XYZ
conditions होते हैं, different तरीके होते हैं. But with an individual like Vivek Agnihotri, and he's produced great films. He's directed, sorry, I think great films. Kashmir Files also, I think, is Vivek Agnihotri. Yes, yes, yes. So, but how does it like change, and how is it different? Corporates में there are a lot of segments which we have to follow. So there will be a lot of legal people who are above you, Right, जिन्हें आपको जो आपको टास्क देते हैं, you have to guide them how to do, how to go about it, right, and that's it. Corporate में वैसा रहता है structuring. right, While we talk about independent persons, say विवेक अग्निहोत्री और मोहित लालवानी, I can talk to them directly. विवेक सर को इतना टाइम नहीं होता है, so there's Pallavi ma'am who comes to play, Pallavi Joshi. right. She usually coordinates for all the agreements, all the deal Okay, terms, everything, right? So okay, that's how that works. While calling talking about Mohit, Mohit is a great friend and उसके साथ ऐसा रिलेशन है ना कि he'll call me like कि ये रजिस्टर करके दे दे अभी एक दिन में करके दे ना like okay चल right, ठीक है. So right, sometime you develop a relationship with few people right. and sometime it's just very professional. You have to keep it that way. So corporates में करना is ऐसे समझिए आपकी 9 to 5 ही है. Okay, okay, You okay. consult them for certain time period कि Right. इस डेट से इस डेट तक के लिए मैं आपके साथ इन्वॉल्व रहूंगी एज अ लीगल काउंसिल एंड Okay. वॉट एवर यू queries you have, you ask me whatever agreements you want me to check, give me as a retainer, and I'll do it for you, and that's done. Right. While when we work with independent practitioners, हमें उन्हें कुछ पर्सनल वे में भी समझाना पड़ती हैं चीज़ें, जैसे सर आप यहाँ पे इंडेमनिटी लीजिए, उस इंडेमनिटी का मतलब क्या होगा, क्यों इम्पोर्टेंट Right. है ये लेना आपके लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है तो क्या आप चाहते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहे, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग. सो बहुत सारे क्लॉजेज है विच आई कैन नॉट डिस्क्लोज, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी नीड टू एक्सप्लेन देम ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल. Right. Because if I come from a creator's mindset, I know उन लोगों को exploit कहाँ किया जा सकता है. Because I have worked on both the ends. Right. Right. I Right. have worked with the producers, so I know वो क्या चाहते हैं creators से. I have worked with the creators, तो अब मुझे पता है कि वो क्या चाहते हैं producers से. Right. So And somewhere that balance is I really have the balanced it out. Yes. harmony you're seeking out. Perfect, perfect, Yes. perfect. Okay, Avdi, so help me understand this a little bit better. Okay, so you said that you work with these individuals, and then probably you work with corporates, and you see that difference, and a personal connect bhi ho jata hai. But at the same time, like, does the professional part of the relationship, when let's say अगर आप किसी के दोस्त हो, in that sense, है ना, किसी से दोस्ती हो जाती है, you're working with them, and then professionally also you're dealing with them. Does Sorry, this your voice is not Yeah, I think audible. your screen froze for a while, so it's all right. I was just asking कि अगर आप जैसे आप जो बोल रहे हो उसमें अगर आप पर्सनली और प्रोफेशनली काम कर रहे हो, इमेजिन करो जैसे you said like he's like a friend, Hmm. बट कई बार ऐसा होता है कि मतलब काम एक थोड़ा हीटेड हो जाता है, और मतलब कई सारी और भी चीजें आती हैं, निटिग्रिटीज आती हैं उस काम के साथ. डज इट अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन? डज इट हैव अ Yeah, टोन? yeah, in past it has been affected, and उस time पे मैं ऐसे करती हूँ that I will tell them that let's keep our relationship and let me pass your reference to my juniors. राइट, They will work with you legal way में, and let's we just be friends. तुमको मैं juniors परेशान कर रही, you call me, you tell me if they're राइट, not working nicely with you. राइट, But let's keep the friendship because that relationship matters at the end of the day in this industry, or for that matter in any place. राइट. Relationship को मैं ऊपर रखती हूँ, and that's how मैं यू आर this is something I follow. मैं ओके. उन्हें pass on कर देती हूँ to other people. Yes. Absolutely, absolutely. And I think that way also everything stays intact, and that's good. But okay, एक और चीज है, आप independently भी काम कर रहे हो लोगों के साथ, like it is there that you can work as a advisory capacity में काम कर सकते हो, ये वो चीजें. And then you are working with VNA partners also. There's something called COI, that is the conflict of interest, right? कई VNA कभी Partners is Yeah. my baby. It's my firm. Okay, 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 yeah. You are the managing partner, so it's like your brainchild. Again, you're frozen. It's okay. We'll just pause. We'll have to edit all of this out. Part. I'm not working with them. It is my एक सेकंड, firm. एक सेकंड, एक सेकंड. या वो पूरा ही ब्रेक कर गया था. Sorry. Okay, yeah, it's Yeah. fine. So you are the managing partner.
आज VNA. So it's like your yes, brainchild. yes, yes. But at the same time, Yeah, अगर आप इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहे हो तो क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कभी? नहीं होता है बिकॉज वो लोग वीएनए को हायर करते ओके. हैं. अवधि, वी वर या recording is in progress. Also, we'll again edit out this part. मैं इस पे भी बोल रहा था when you were out and the recording was on. But it doesn't matter. Okay, so we just are trying to understand how the conflict of interest plays out, Avadhi, right? ओके Between सो the yeah, विथ सोनी आई वॉज एक कॉन्सेप्ट है सो एएनएम ग्लोबल की कंसल्टेंट हूँ मैं yeah. आई मीन रादर थी एंड दे हायर्ड मी फॉर सोनी to Okay, give their services. So that's a channel. right. While I do this, I don't practice my VNA का clientele at all. वो मैं Okay, freeze कर देती हूँ या मेरे juniors कर रहे होते हैं. I'm not involved at all. right. वो जब एंड होता है तभी आई स्टार्ट वीएनए का क्लाइंटेल एंड द Oh, अदर क्लाइंट्स आर अंडर वीएनए ओनली सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सो यू हैव right, टू right, फ्रीज इट अगर नॉन एक्सक्लूसिविटी है आपकी विद द पर्सन तो आप दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कर सकते हो एंड इफ यू बिलीव कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है देन यू हैव टू इन्फॉर्म बोथ योर क्लाइंट्स कि देखिए मैं दोनों को okay. रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्या इफ यू गाइज आर ओके विद इट Right, right, right. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स Okay, Avdhi, so you are, like you said, VNA Partners is your brainchild. It's like your baby. And this is something that you have started. There are a lot of good media and entertainment firms in the industry. That's राइट something that's out there. खुद का क्यों शुरू किया? Why did you start something that is Maybe because I wanted to start something which I initially said as an awareness campaign. VNA I Partners? plan, sorry, VNA Partners you wanted to VNA start? partners also. Okay, So, in the long run, what I intend to do through VNA is to make people aware what are intellectual property, okay, what are the rights. I wanted to write books on it. I want to know, let people know and understand even कि तुम्हारी चाय बना रहे हो ना उसमें भी क्या आईपी इन्वॉल्व होता है right, so VNA as a law firm definitely is going to grow and why it started with the mission कि मैं एक बहुत not so toxic work culture promote करना चाहती हूँ right, right, जहाँ बच्चे आए एंड दिल से आए फोर्सफुली ना आए एंड दे लर्न एंड एंजॉय दैट इज व्हाट आई ड्रीम ऑफ दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस लॉ फर्म टू डू that it should be a second home to the people working there okay, and वो ऐसे ना बोले आके कि I don't want to work here but क्या करे अभी पेट की बात है कमाना तो पड़ेगा आई डोंट okay, वांट दैट आई okay. वांट देम टू से कि ओ माय गॉड मैम जल्दी क्यों छोड़ रहे हो वी वांट टू एंजॉय अच्छा, दिस एंड okay, दैट okay, okay. let's work together, let's do this, let's do that. So that healthy environment, it is very important and I think that's what I want to promote through this. Right, right, right. All the healthy, positive vibes are coming towards, I'll term this episode as something spiritual because no, but yeah, you have a really, I've been saying it, the vibe has been very positive and it's a great note to start 2024 on. And even with, I think खुद का भी काम ऐसा कुछ ना कुछ तो करते रहना ही चाहिए, irrespective भी यार. And then you have this mindset also that is good. Also, why not reach out to the interns through this also? What is your process to hire interns? What do you look for in a Okay. candidate? Please. Very basic thing. You need to apply. I will go through your resume and I will send you an assignment. Okay. If your assignment is nearly 40% up to the mark, Right. and you are willing not just for the certificate but to learn media laws, Right. then I definitely give you a chance for a month Right. at least, or maybe Right. for a 15 days ka period because there are a Right. lot of work, and I want to take as many interns as I can and make them understand what is it. Virtual, physical, दोनों? नहीं फिजिकल नहीं है इट्स Okay. solely remote working. Okay. So बच्चे यूजुअली आफ्टर अपना क्लास आते हैं एंड दे विल जस्ट पिंग मी मैम 2 बज गए हम आ गए हैं बताओ क्या करना है सो Right. मतलब आई एम ग्लैड कि अभी जो भी इंटर्न्स है मेरे दे आर लाइक सम पीपल कि हमको जाना ही नहीं है हम नहीं जाएंगे यू हायर मोर पीपल वी डोंट केयर बट वी आर नॉट लीविंग यू Right. and they are here from like 4 to 5 months they will not go they just don't go so Okay. I'm really glad because the aim I have for this firm is just in line
They Right. don't want to leave me, and that's what I want, that they're very happy with what they're doing. No, So yeah. sometimes good things do happen to good people, Avdi, and it seems to be happening for you. And it's good initially to witness that sort of toxic culture and then try to cure it in your own way. And that's really nice. And it comes across also in the way you've been presenting yourself today, and also the way you've been talking about your firm. And then your family is also quite amazing. But okay, Avdi, to the more sensitive parts, and then probably we'll take a we we'll end Yeah. this conversation has been going on for a while. But it's very different and difficult for some people who are not like I'm talking with respect to VNA partners or any other firm. Like you were trying to figure out your own things, and you're Right. saying you provide them with that healthy environment. Has it ever happened that someone who's joined has not enjoyed the work culture that your firm promotes, or has you seen any sort of resistance, or is it all been good right now and there's nothing that is. Uh, yeah, it has always been really good. I'm blessed, touchwood. Yeah. But yeah, sometimes interns come and they come from the perspective कि मैम सर्टिफिकेट दे दो, Right. पर काम उनको कुछ नहीं करना है. So in those scenario, I'm very upset because you just took someone's place who was very much, who was in line Into it. with what Yeah. I think, right? Yeah. Yeah. So that's the only appeal I make to everybody while I interview also कि are you genuinely interested in learning? अगर सर्टिफिकेट के लिए आ रहे हो तो प्लीज मत आओ, रिक्वेस्ट भी मत भेजो मुझे. Right, right, right. And do So internships turn into PPOs? Is your company hiring for associates and everything for no, people? not at the moment, no. Not at the moment. Okay, okay. So this is basically more like your work that's there, and then you're hiring interns, and then you work with a motive that you want to promote Correct. media and That's entertainment law and intellectual property rights. And I think we've pretty much covered the way one can start into this field and then probably go about it. And I think that is sort of a good note to proceed towards the concluding part of this episode.